बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 18 है ऑफ टॉफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स। आज हम इसमें वर्ब एज कॉम्प्लीमेंट को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, उनकी ग्रामर को प्रॉपर डायसेक्ट करेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की फॉर लाइफ टाइम क्लैरिटी हो। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन। Now verbs that are always followed by the infinitive form of verb, which is to followed by verb simple form. Now sometimes आपके पास verb के बाद एक और दूसरा verb मौजूद होता है जो कि complement के तौर पे सर्व कर रहा होता है, unlike using a noun, which is a usual case. आपके पास noun को हम as complement use करते हैं, but what if आपके पास verb के बाद एक और verb मौजूद हो as a complement form. इन दैट केस आपके पास उस वर्ब को एक्सप्रेस करने की दो ही कंडीशंस हैं. वन, इट इज़ ईदर इन द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, और सेकंड इट कैन बी इन द जीरन फॉर्म ऑफ वर्ब, विच वी नो बाय नाउ कि जीरन वर्ब फॉर्म इज़ अ वर्ब विद आईएनजी फॉर्म. सो अगर आपके पास वर्ब के बाद एक और वर्ब मौजूद है विच इज़ एक्टिंग लाइक ए कॉम्प्लीमेंट, तो इट कैन बी इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म विच इज़ टू प्लस सिंपल वर्ब फॉर्म, या इट कैन बी जीरन फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म. सो अब हम स्टडी करेंगे उन लिस्ट ऑफ वर्ब्स को जिनके बाद आने वाला जो वर्ब है ऑन कॉम्प्लीमेंट पोजीशन वो आपके पास सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म में मौजूद होगा. नाउ दीज आर द वर्ब्स लिस्ट जिनके बाद आने वाला जो वर्ब है ऑन कॉम्प्लीमेंट पोजीशन हम उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में ही लिखेंगे एंड नॉट अदरवाइज, एंड मस्ट ऑलवेज बी रिटन एज ए इन्फिनेटिव फॉर्म. सो अब हम इस लिस्ट को देखते हैं. आपको मैं इस पॉइंट पे सजेस्ट ये करूँगी कि काइंडली अपनी वीडियो को पॉज करके इन लिस्ट को अपने पास कहीं प्रॉपर नोट लिख कर लें ताकि आपके पास लिखने और एंड इवन इन योर स्पीच आपको हमेशा क्लैरिटी रहे कि किन वर्ब्स के बाद आपने इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म को लिखना है. सो दीज लिस्ट ऑफ वर्ब्स इंक्लूड एग्री, अटेम्प्ट, क्लेम, डिसाइड, डिमांड, डिज़ायर, एक्सपेक्ट, फेल, फॉरगेट, हेजिटेट, होप, इंटेंट, लर्न, नीड, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर, प्रिटेंड, रिफ्यूज़, seem, strive, tend, want, wish. तो इन लिस्ट के बाद इन वर्ब के बाद आने के बाद वाला जो भी वर्ब मौजूद होगा कॉम्प्लीमेंट पोजीशन पर हम उसको सिर्फ इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखेंगे. अब इसको हम एग्जाम्पल से फर्दर क्लैरिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एग्जाम्पल इज जॉन एक्सपेक्ट्स टू बिगिन स्टडीइंग लॉ नेक्स्ट सेमेस्टर. सो एक्सपेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है दैट इज़ इन द इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म. Mary learned to swim when she was very young. Learn के बाद infinitive verb form है. Again, these all blue highlighted verbs are all from the list we just spoke about. The budget committee decided to postpone this meeting. Again, decide के बाद आने वाला जो verb है that is infinitive form. The president will attempt to reduce inflation in the next 4 years. Attempt के बाद infinitive verb form. मैं हर point पे आपको ये बात reinforce कराऊंगी ताकि आपको हमेशा से याद रह जाए what is the infinitive verb form and what is gerund verb form. Then example is soldiers are preparing to attack the village. The verb prepare is followed by an infinitive verb form. Cynthia has agreed to act as a liaison between the two countries. The agree is followed by an infinitive verb form. Now what about those verbs जिनके बाद आने वाला verb on complement position must always be written in the gerund verb form. So these are the list of verbs जिनके बाद आने वाला verb must always be in the gerund form and not in the infinitive form. इससे पहले जो लिस्ट आपको बताई थी आई होप आपने उसको पॉइंट अब नोट डाउन कर लिया है. इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी अपनी वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को अपने पास नोट डाउन कर लें. इन वर्ब्स के बाद आने वाला वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन दी जीरन फॉर्म और इसको हम एग्जाम्पल्स में भी रीइंफोर्स करेंगे. सो द लिस्ट इंक्लूड एडमिट, appreciate, avoid, can't help, consider, delay, deny, enjoy, finish, mind, miss, postpone, practice, quit, recall, report, resent, resist, resume, risk, suggest. इनके बाद आने वाला जो verb होगा that must be in the gerund form. Let's look at the few examples. John admitted stealing the jewels. Stealing the jewels. Now stealing is a gerund form of verb in the ing form. We enjoyed seeing them again after so many years. Enjoy के बाद आपका जो verb है that is in the gerund form. You should not risk entering this building in its present condition. Risk के बाद आपके पास जो verb है that is in the ing या gerund form.
Michael was considering buying a new car until the prices went up. So considering के बाद आपके पास जो verb है that is in the ing form which is a gerund verb form. The Coast Guard has reported seeing another ship in the Florida Straits. So reported के बाद आपके पास जो verb है that is in the gerund verb form. And final example, would you mind not smoking in this office? Again आपके पास जो verb के बाद जो verb gerund form में आएगा that is in the that smoking which is in the ing form. So this and having keeping all these concept into mind, एक important चीज़ आपको और बताने हैं कि आपने जब इन sentences को negative form में convert करना हो, be it a sentence of an infinitive form or having verb in the infinitive form या gerund form, तो आपने ऐसे sentences को negative बनाने के लिए सिर्फ आपने negative article not को just before your infinitive और gerund verb form से पहले ही लिख देना है. For example, John decided not to buy the car. आपको मालूम था decided के बाद हम to buy लिखते हैं because it's infinitive verb form. तो आपने just इस sentence को negative बनाने के लिए not के article को insert करना है to buy से पहले. इसी तरीके से we regretted not going to the party last night. So regret के बाद आपके पास gerund verb form था, and to make the sentence negative you just inserted the negative article not before the gerund form of verb. So just to know how to make these sentences negative, you just insert the word article negative and the whole not, and the whole sentence will make you sense. Now these are the verbs that can be followed both by infinitive form or can be followed by a gerund verb form, and yet there is no change in the meaning whatsoever. इससे पहले हम list of verbs study कर चुके हैं जिनमें आपके पास सिर्फ ऑप्शन है कि आपने infinitive verb form को mention करना है. कुछ फिर हमने स्टडी किया जिनके बाद आप सिर्फ gerund form of verb को लिख सकते हैं. Now we'll study about those verbs जिनके बाद आप infinitive भी लिख सकते हैं, flexibly और gerund form भी लिख सकते हैं, and be comfortable about कि इनकी meanings में भी कोई difference नहीं आएगा. So the list include begin, can't stand, continue, dread, hate, like, love, prefer, regret, start, try. So any of them followed by any verb, so the verb can be both infinitive or gerund and yet be comfortable कि आपके पास there will be no change in the meaning of the sentence whatsoever. अब इसको example में देखते हैं. He started to study after dinner. So the word start is followed by infinitive verb form to study. और अगर हम इसको gerund form में करें, so he started studying after dinner. So हमने instead of writing infinitive we write it gerund form, and yet the sentence has no change in the meaning whatsoever. Another example, John hates to ride a bicycle to school. So the hate is followed by infinitive verb form, or it can be written as John hates riding bicycle to school, and it's a gerund form, and yet there is no change in the meanings of the sentence. So regardless इन list के बाद आप infinitive लिखें या gerund लिखें, आप comfortable हैं कि आपकी change of meaning नहीं होगी. Now there is some important rule to look at. अभी हमने verbs के बारे में study कर लिया. Now what if आपका verb आपके preposition combination में हो, आपके पास एडजेक्टिव preposition combination में हो, या नाउन preposition combination में हो, या preposition all by alone हो. इन चार कंडीशंस के बाद में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब भी इन चार कंडीशंस के बाद वर्ब आएगा, then must always be followed by a gerund verb form. Any of the verbs followed by under these conditions, directly after these conditions, so it must be in the gerund form, and you know gerund form is a verb in the ing form. So these are the following list of verbs preposition combination. इनके बाद आने वाला verb must always be in the gerund form. So the list is again, जहाँ आप list देखेंगे अपनी वीडियो में, kindly वहाँ पे वीडियो पॉज करके इस list को अपने पास लिख लें, सेव कर लें. It's an important note ताकि आपको आपकी writing improve हो with time from grammatical point of view, ताकि आपको errors ना cause करें. So the list includes approve of, which is again is a verb followed by a preposition. Be better off, count on, then comes depend on, followed by given up, insist on, keep on, put off, rely on, succeed in, think about, think of, worry about. So these are the verb and preposition combinations जिनके बाद आने वाला verb will always be in the gerund form. So let's look at few examples. John gave up smoking because of his doctor's advice. So gave up is a verb preposition combination, so followed by a verb in the gerund form. So up is a preposition, verb preposition combination followed by a gerund form of verb.
Another example is Mary insisted on taking the bus instead of the plane. So insist on is a verb preposition combination, so it will be followed by a gerund verb form. Henry is thinking of going to France in August. So it's a verb preposition combination followed by a verb in the gerund form. You should be better off leaving now instead of tomorrow. So this be better off is a verb preposition combination, so followed by a verb in the gerund form, which is an ing form. Now the following expression contain, these are the three verb expressions to look at. These are the expressions of verb preposition combinations where this to is actually a preposition, and so be mindful of this कि इन expressions के अंदर जो आपके पास to लिखा हुआ है, this is a preposition and it has nothing to do with the to of infinitive verb form. So इसके बाद आपको ये preposition ही है, तो इसके बाद आने वाला verb भी gerund form में ही होगा. So these verb preposition combinations again must always be followed by a verb in its gerund form. So इसकी example देख लेते हैं. So these three verbs are object to, look forward to, and confess to. Again, these to is a preposition, so you better not confuse it with an infinitive verb form to. So look at the examples now. Fred confessed to stealing the jewels. So again, this is a verb preposition combination followed by a verb in the gerund form. We are not looking forward to going back to school. So again, forward to is followed by a verb preposition, so it's the verb followed by must be in the gerund form, which is a going. Now we spoke about the verb preposition combinations. Now we look at few examples जहाँ पे आपके पास adjective मौजूद है preposition के साथ combination में, तो इनके बाद आने वाला verb भी must always be in the gerund form. So look at the examples of those adjective prepositions. It includes accustomed to, this is an adjective followed by a to, which is a preposition. Afraid of, again adjective followed by preposition. Capable of is again adjective followed by preposition. Fond of, intent on, interested in, successful in, tired of. So kindly stop your video, pause your video here और इन adjective preposition को list कर लें. इनके बाद आने वाला verb must be again in the gerund form. So example are Mitch is afraid of getting married now. This afraid of is followed by a verb in the gerund form. We are accustomed to sleeping late on weekends. So accustomed to is an adjective preposition combination followed by a verb in the gerund form, which is sleeping. Jean is not capable of understanding the predicament. So this capable of is an adjective preposition combination which is followed by a gerund verb form. Alvaro is intent on finishing school next year. So intent on is an adjective preposition composition followed by verb in the gerund form. Craig is fond of dancing. Again, fond of is an adjective preposition combination followed by gerund form of verb. We are interested in seeing this film. So this interested in is an adjective preposition combination followed by gerund verb form. इन तमाम कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करने का मकसद सिर्फ आपको इनको दिमाग में इंग्रेव कराना मकसूद है. Now we studied about the verb preposition combination, adjective preposition combinations. Now what about जब आपके पास noun preposition combination हो, तो ऐसे में भी बाद में आने वाला जो verb है that must be again in the gerund form. So look at the example of those noun preposition combination जिनके बाद आने वाला verb must always be in the gerund form. So this include choice of, excuse for, intention of, method for, possibility of, reason for, method of. So in noun preposition combinations के बाद आने वाला verb भी gerund form में ही होगा. तो example देख लेते हैं. George has no excuse for dropping out of school. For dropping out of school. So again, this is a word, it's a noun preposition combination again followed by gerund verb form. There is a possibility of acquiring this property at a good price. So possibility of is followed by a gerund verb form. There is no reason for leaving this early. So this is a noun preposition combination followed by a gerund form of verb. Connie has developed a method for evaluating this problem. So method for is a noun preposition combination. By now आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी preposition आ गया है उसके बाद फौरन आने वाला जो verb है that will be in the verb in the gerund form. Now so far हमने study किया कि आपके पास अगर verb preposition हो, noun preposition हो या adjective preposition हो. So what about if any time you have an only preposition which is followed directly by a verb, then verb will always be in the gerund form. For example, after leaving the party, this after is again we know by now is a preposition. So after leaving the party, Ali drove home. So the verb right after preposition, the verb is in the gerund form. He should have stayed in New York instead of moving to Maine. So this of is again preposition followed by a verb in the gerund form.
Now we spoke about those verb, adjective, noun with prepositions or preposition alone. अब हम स्टडी करेंगे उन लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स को विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अगेन नेवर बाय द जीरन फॉर्म. सो यहाँ पे इसको हाईलाइट करने का मकसद ये कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इन एडजेक्टिव्स के बाद आने वाला जो वर्ब होगा दैट विल ऑलवेज बी इन्फिनिटिव और आपने उसको जीरन नहीं मेंशन करना. तो अगेन पॉज योर वीडियो एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज एडजेक्टिव्स. अब हम पहले इन एडजेक्टिव्स को स्टडी करते हैं. द लिस्ट इंक्लूड्स एंशियस, boring, dangerous, hard, eager, easy, good, strange, pleased, prepared, ready, able, usual, common, difficult. These are the list of adjectives जिनके बाद आने वाला जो verb है that will be infinitive form. एक और important चीज़ है वो regarding है able. हमने इसको इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट करके highlight किया है but we'll speak about it in a while. अब हम पहले इनके examples को study करते हैं. Muhammad is eager to see his family. So the word adjective eager is followed by an infinitive verb form to see. It is dangerous to drive in this weather. So the adjective dangerous is followed by a verb in the infinitive form which is to drive. We are ready to leave now. So the ready adjective is followed by a verb in the infinitive form which is to leave. It is difficult to pass this test. So difficult is followed by infinitive verb form. It is uncommon to find such good crops in this section of the country. So the word uncommon is followed by infinitive verb form. Ritsko was pleased to be admitted to the college. Again this is infinitive verb form. So again आपको ये बात बताना मकसूद है कि इन adjectives के बाद आने वाला जो verb है that will be in the infinitive form. नाउ हमने एबल को हाईलाइट किया था लास्ट लिस्ट में और हमने आपको बताया था कि हम स्टडी करेंगे व्हाई इट इज़ स्पेसिफिकली हाईलाइटेड. सो एबल मीन्स द सेम एज केपेबल. हम इस दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं. एबल एंड केपेबल आर यूज इंटरचेंजेबली बिकॉज द मीनिंग्स आर द सेम. बट आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ग्रामेटिकली दे हैव अ लॉट मोर डिफरेंस. तो आपने अगर इनको लिखना है ज़रूर लिखें, इनको इंटरचेंजेबली लिखें बिकॉज द मीनिंग्स आर सेम. बट ग्रामेटिकली आपने इनके बारे में केयरफुल होना है. वो केयर ये है कि जब एबल आपने लिखना है तो एबल के बाद आने वाला जो वर्ब है दैट विल बी इन द इन्फिनिटिव फॉर्म जिस तरह ये पहले हमारी लिस्ट में मौजूद था. बट बेयर इन माइंड जब आपके पास केपेबल मौजूद है तो केपेबल को आपने हमेशा लिखने के बाद उसके बाद आपने प्रेपोजिशन ऑफ ऐड करना है और जब प्रेपोजिशन आ जाए उसके बाद आपने विदाउट एनी सेकंड थॉट आपका जो वर्ब आएगा दैट विल बी इन दी जीरन फॉर्म. सो द सेंटेंस विल साउंड लाइक दीज स्टूडेंट्स आर नॉट येट एबल टू हैंडल सच डिफिकल्ट प्रॉब्लम. सो वी नो एबल मीन्स नॉट हैविंग एबिलिटी और हैविंग एन एबिलिटी टू बी प्रिसाइज. सो यहाँ पे एबल के बाद आपने इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म लिखा है. बट अगर आपने इसी सेंटेंस को केपेबल के साथ लिखना है विद ऑल द सेम मीनिंग्स तो दीज स्टूडेंट्स आर नॉट येट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एबल जस्ट राइट केपेबल और केपेबल के बाद आपने प्रेपोजिशन ऑफ मेंशन करना है और वंस यू हैव प्रेपोजिशन तो विदाउट सेकंड थॉट आपने जीरन फॉर्म ऑफ वर्ब हैंडलिंग लिखना है. Instead of to handle it comes handling such difficult problem. So bear in mind able capable meaning के एतबार से सेम है बट जब आपने उनको ग्रामेटिकली लिखना है तो able के बाद infinitive verb form और capable के बाद आपने preposition of और फिर gerund verb form को लिखना है. So far we spoke about all those details. Now there are some verbs that can be followed by either infinitive form or the gerund form. But in that case आपको ये ख्याल होना चाहिए कि ऐसे में उनकी meanings जो होंगी चेंज हो जाएंगी. तो despite of having flexibility writing both infinitive और gerund form verb, but दोनों cases में इनके meanings बदल जाएंगे. तो आपने you should be very careful about the decision whether you are going to take write a infinitive form or a gerund form verb. वो तीन वर्ब जिनके बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इन्फिनिटिव और जीरन फॉर्म लिख सकते हैं अगैन विद द डिफरेंट मीनिंग्स टुगेदर. सो दीज थ्री वर्ब्स आर स्टॉप, रिमेंबर एंड फॉरगेट. इन तीन के बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है इन्फिनिटिव लिखने की भी और जीरन फॉर्म लिखने की भी. सिर्फ ये आपको ख्याल रखना है कि ऐसे में मायने बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जॉन स्टॉप्ड स्टडीइंग. So इसका मतलब ये कि John is not studying to stop. John is not going to study anymore. So John has just put a full stop to his studies. So that was simple. It means कि stop के बाद gerund form verb आया और meaning ये है कि John ने study छोड़ दी है. But if you write John stopped to study तो यहाँ पर आपने stop के बाद infinitive verb form लिखा है and this sentence means that John stopped during something in order to study. Now it means altogether different thing कि John कुछ और काम को छोड़कर उसने उस काम को pause करके stop करके study start किया. So just a single difference of a gerund to a infinitive form, the meanings a whole lot difference. तो आपने जब इन तीन verbs के साथ
डिसाइड करना है वेदर इट्स इन्फिनेटिव तो जीरन फॉर्म, तो यू शुड बी माइंडफुल कि आपने आपके जो आपने पॉइंट क्रॉस करना है, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। ऑल अबाउट द वर्ब एज कॉम्प्लीमेंट का लेसन। आई होप दिस ऑल मेक सेंस बाय नाउ। जस्ट इन केस आपको इसके बारे में फर्दर क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट के बारे में रीइंफोर्स चाहिए, तो अब हम इसके लिए एक 20 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपके पास हर सेंटेंस में पैरेंथेसिस में जीरन और इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म गिवन है। बाय नाउ आपके पास लिस्ट है हर वर्ब की, एडजेक्टिव्स की और इनकी प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशंस में कि किन के साथ आपने जीरन फॉर्म लिखना है और किन के साथ इन्फिनिटिव फॉर्म लिखना है। तो जस्ट बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज आप अपने नोट सामने रखें और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। देयर आर 10 मोर क्वेश्चंस हेयर, सो जस्ट स्टॉप योर वीडियो, पॉज योर वीडियो है और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। वंस यू आर डन विद दोज क्वेश्चंस, फिर हम आपके आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। सो फॉर दोज हु आर डन विद एन एक्सरसाइज बाय नाउ, अब हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आंसर विच कम्स ऑन योर स्क्रीन नाउ। The first question, the teacher decided to accept that paper. So the decided followed by infinitive verb form to accept. They appreciate having this information. The word appreciate is followed by a gerund verb form. His father does not approve of his going to Europe. So we know approve of is a combination with prepositions. So without any second thought, just select the gerund verb form. Question 4, we found it very difficult to reach a decision. So difficult is followed by infinitive verb form. Donna is interested in opening a bar, and we know in is a preposition, so without second thought, just a gerund form of verb. Question 6, George has no intention of leaving the city now, and intention of is a combination with prepositions, so gerund form of verb. Question 7, you are eager to return to school in fall. So this word eager is followed by infinitive verb form. Question 8, you would be better off buying this car. This off is preposition, so without second thought, just select the gerund form of verb. Question 9, she refused to accept this gift. So the word refuse is followed by infinitive verb form. Mary regrets being the one to have to tell him, being the one to have to tell him. So this is going to be regret followed by a gerund form of verb. 7, George pretended to be sick yesterday, so pretend is followed by infinitive verb form. Question 12, Carlos hope to finish his thesis this year. So the word hope is followed by the infinitive verb form to finish. Question 13, they agreed to leave early. So agree is followed by infinitive verb form. Question 14, Helen was anxious to tell her family about her promotion. So the word anxious is followed by infinitive verb form. Question 15, we are not ready to stop this research at this time. So the ready is followed by infinitive verb form. Now comes question 16. Henry should not risk driving so fast. The word risk is followed by gerund verb form. Question 17, he demands to know what's going on. So the word demand is followed by infinitive verb form. Now comes question 18, which is she's looking forward to returning to her country. So the word looking forward to is preposition. So just after preposition, we know it's a straight gerund verb form. Question 19, there is no excuse for leaving the room in this condition. So the for is a preposition. So whatever comes after preposition is nothing but a gerund verb form, which is leaving here. And final, question 20, Gerald returned to his home after leaving the game. So the word after is a preposition, and again after preposition just a straight gerund verb form. So this is all about the verb as complement lesson. If you like this video, subscribe to my channel and share with your friends and family. If you have any question left, kindly let me know in the comment section below. Thanks for watching this video.